Good morning, team. Yesterday, Finance Minister made a statement, but we have discussed this even before. The remittance from overseas Indian is higher by 12%. So it is almost $100 billion in calendar year 2022. Very positive because there is a deficit between the imports and exports. So this remittances and even services exports normally fulfill that gap, and in one more news, rupee has started to strengthen. So Indian currency now is strengthening. Yesterday it was almost at 81 point odd, and 61 rupees, it strengthened. So rupee strength is positive for import-based industries. Maybe for export-based industry, it is slightly negative, but import-based industry. So we import huge crude oil. So, all oil marketing companies, gas companies, these are likely to benefit. So we like oil marketing companies and pure refiner, IOC, Hind Petro, Chennai Petro are few. Even MGL and Gujarat Gas can be looked at. Yesterday we saw even GSPL and Petronet rally. So these are stock, if market starts to stabilize, these are stock which will recover and rally. Yesterday when market was down 200 points also, oil marketing companies were giving gains, positive gain in that market. So this is one sector and stocks to watch. Defense Acquisition Council held here on Tuesday acceptance of necessity has accorded for 3 capital acquisition proposal amounting to 4,276 crores. Defense companies are in focus as global defense trade has started to increase. That is what data is saying due to Ukraine-Russia war and China aggressive pose with its neighbors. Indian pharma market grew at 10.5% in December 2022. One thing is price increase has been there in the last few months. That has made the growth even higher. Alembic Pharma, APLL, and Alchem grew at 16%. Cipla and Eris Life Sciences grew at 14 to 16%. MNC Pharma, except for Abbott, nothing is great. Abbott has grown by 13% in that space. NTPC yesterday said in a notification that it has produced 14.55 million tons of coal from captive mines in April-December 2022. And last year it was less than 10 million tons. So I think this is a very big increase there. TVS Motor launches TVS new Metro Plus 110cc in Bangladesh. Jindal Worldwide announces new two-wheeler electric vehicle manufacturing plant and fully automated battery plant with production capacity of 2.5 lakh vehicle. This will be in Ahmedabad, and the product will be launched in April 2023. So more competition in EV two-wheeler space. Shriya Shipping has sold one vessel, MVSSL Chennai. We don't track the stock. GE Shipping has signed a contract to buy 2007 built 80-ton anchor handling tug supply vessel. The vessel would join the fleet by Q4 FY23. This is one interesting news. The company is a very small, below 200 crore stock, but important is the data which this company has given. Ducon Infra Technology sees FGD related business opportunity 10,000 crores to 15,000 crores over the next 3-4 years. FGD is flue gas desulfurization. So all these coal-based thermal plant,
they have to reduce their pollution, for which India has about 211 gigawatt of coal thermal power, out of which 87 gigawatt of thermal power companies have started to put this FGD, but there is balance of 120 gigawatt of power plant which has to do it. So this company is saying there is a big opportunity for them in this space. Tata Passenger Electric Mobility completes acquisition of India's Sadanand plant in Gujarat. Positive for Tata Motors. Adani Port and Israel Group has completed acquisition of HPC from Government of Israel. So Adani Port will hold 70% and 30% by the Israeli group company. The investment is for $118 billion. Concession period for the port will be up to 2054. I think that is almost 21 years period from now, or 22 years period from now. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो फर्स्ट अपडेट जो है पीसी ज्वेलर के ऊपर है. कंपनी के डोमेस्टिक सेल क्वार्टर एंड में राइज हुए 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस से जो 829 करोड़ है. ज्वेलरी मेकर ने न्यू फ्रेंचाइजी शोरूम बिहार में ये क्वार्टर में ओपन किया है. नेक्स्ट अपडेट है सिगाजी इंडस्ट्री के ऊपर. कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है जो उनका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज करने के लिए. तो अभी वो 32 करोड़ से 42 करोड़ होगा और ये वे ऑफ इशू अप टू 1.12 करोड़ ही होगा कन्वर्टेबल वारंट्स में टू द प्रमोटर्स. और उसका जो प्राइस है वो 285.30 पर शेयर है. नेक्स्ट अपडेट है उत्तम शुगर मिल्स के ऊपर. कंपनी ने उनका जो इंक्रीज है डिस्टिलेटरी कैपेसिटी फ्रॉम इथेनॉल वो इंक्रीज किया है 150 KLPD से 250 KLPD बरकतपुर प्लांट में. और जो उनका केक क्रशिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज किया है 23,750 से 26,200 TCD. देन नेक्स्ट अपडेट है एक्सिस बैंक के ऊपर. एक्सिस बैंक ने रिवाइज एग्रीमेंट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ किया है. जो मैक्स फाइनेंशियल अक्वायर करने वाली थी बैलेंस 7% इक्विटी मैक्स फाइनेंशियल जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें. तो हमारा व्यू पॉजिटिव है एक्सिस बैंक के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से. नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है वो इंक्रीज किया है 35 बेसिस पॉइंट और 10 ईयर के लिए और जो इफेक्टिव होगा जनवरी 12 से. देन टाटा मोटर्स जो कंपनी उन्होंने कंप्लीटेड किया एक्विजिशन फोर्ड के जो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लान है सानंद में उनके सब्सिडरी के थ्रू से. तो ये पॉजिटिव रहेगा टाटा मोटर्स के लिए. और जो उनका अगस्त का लास्ट ईयर का कंपनी ने अनाउंस किया था टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वो भी एक्वायर्ड किया फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सदानंद प्लान में. और उसकी जो वैल्यू है वो 725.7 करोड़ है. कल फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अनाउंस किया था और इसके पहले हम लोगों ने भी इसके ऊपर अपडेट दिया था कि जो रेमिटेंस है ओवरसीज का जो हायर आया हुआ है 12% से कैलेंडर ईयर 2022 में. तो ये पॉजिटिव है. और रेमिटेंस और जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हुआ है. तो और उसके कारण जो रुपीस है वो भी उसमें स्ट्रेंथनिंग दिखना स्टार्ट हुआ है. और रुपी का जो स्ट्रेंथनिंग है वो पॉजिटिव रहेगा जो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए. क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं. तो ये OMC जो स्टॉक है उसके लिए बेनिफिशियरी रहेगा. तो उसमें IOC है, हिंद पेट्रो है, चेन्नई पेट्रो है, MGL है, गुजरात गैस है, GSPL है, पेट्रोनेट है. ये सारी कंपनी को फायदा होगा. तो कल मार्केट डाउन था तो भी ये एक जो सेक्टर था वो पॉजिटिव इसमें ट्रेड कर रहा था. तो ये सेक्टर जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा तो ये सेक्टर है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, वॉच आउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट अपडेट है NTPC के ऊपर. NTPC ने
अपडेट दिया था कि वो उन्होंने ये क्वार्टर में कुछ प्रोड्यूस किया है 44.55 मिलियन के अराउंड कुछ कैपिटल माइंस, और जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था 10 मिलियन टन्स कुछ, तो उसके कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव हुआ है। तो ये अच्छा अपडेट है एनटीपीसी के लिए। देन डिफेंस के ऊपर अपडेट था कि डीएसी उन्होंने ग्रांट किया है अप्रूवल प्रोक्यूरमेंट ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए, शिवालिक क्लास ऑफ शिप के लिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स है इंडियन नेवी के लिए। और डिफेंस का जो एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने अप्रूव किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन, और जो 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है 2 इंडियन आर्मी के लिए और एक 1 है वो इंडियन नेवी के लिए, और उसकी जो वर्थ है अराउंड कुछ 4276 करोड़ है। तो डिफेंस और ग्लोबली ट्रेड भी जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके कारण, तो ये स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं। देन फार्मा सेक्टर के ऊपर अपडेट है। इंडियन फार्मा कंपनी है, उनके दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ अच्छी खासी देखी गई, जो उनका जो प्राइस इंक्रीजिंग था वो भी उधर था। तो सिप्ला में कुछ अराउंड 40 to 60% की ग्रोथ देखी गई, और अबाउट इंडिया की कुछ अराउंड 13%। देन नेक्स्ट अपडेट है जी शिपिंग के ऊपर। जी शिपिंग जो कंपनी है उन्होंने उनकी जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जो बाय करेंगे कुछ 2007 बिल्ट एटीटी एंकर हैंडलिंग टग कम सप्लाई वेसल्स। देन नेक्स्ट अपडेट है अदानी पावर ने भी उनका कुछ एक्विजिशन कंप्लीट किया है। देन ड्यूकॉन एक इंफ्राटेक कंपनी है, उनके रिलेटेड एक अपडेट है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ उनका जो बिजनेस रिलेटेड है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 10,000 से लेके 15,000 करोड़ होगा, और कुछ फ्यूल गैस डिस्टिलरेटेड है वो प्रोड्यूस करेंगी, उसमें से कुछ बहुत सारी कंपनियां इंडिया में 87% उसका प्रोडक्शन हो रहा है। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन होटल के ऊपर। जो इंडियन होटल है उन्होंने अनाउंस किया कि वो साइनिंग करेंगी 2 रिसोर्ट्स, वो आइलैंड सुहेली एंड कदमत में होंगे लक्षद्वीप में, और ये बोथ जो रिसोर्ट्स है वो ताज के ब्रांड के अंडर है, और जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो ओपन होगा 2026 में, और वो डेवलप होगा इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड से। और ये जो सुवेली है उसके 110 रूम्स होंगे इंक्लूडिंग 16 विलास बीच पे और 15 वाटर विलास, और जो कदमत है वो उनके भी 102 रूम्स होंगे, वो 75 बीच विलास और 35 वाटर विलास है। तो स्टॉक के ऊपर हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। देन नेक्स्ट अपडेट है सायन जो सब्सिडरी है उन्होंने फाइल किया है आईपीओ के लिए 740 करोड़ के लिए। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इंडिकेट करता है कि उनका जो टोटल इश्यू साइज होगा अप्रोक्स 3000 करोड़ का होगा, और बेस्ड ऑन दिस वैल्यूएशन हम लोग बिलीव है कि सैंड सर्विस मतलब सर्विसेज जो है वो ट्रेड कर रहा है 15x के पीई पे ऑन टीटीएम बेसिस के ऊपर, और सैंड टीएलएम जो है वो वैल्यू होगा 75x पीई पे ऑन टीटीएम बेसिस पे। तो हमारा मेंटेन आउटलुक है वो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक के ऊपर। Technicals and derivatives outlook. So yesterday we saw there was again a sell-off in the market, or the market was Nifty was down by 187 points, and it closed almost close to 17,914 level. So looking at the daily chart, what we are observing that in the last 13 trading session, the Nifty has been trading in the range with the lower side support at 17,800 and 18,300 as a resistance. But now looking at the daily chart, we believe that there were the 2 recent lows at 17,779 and 17,795. So these are the 2 swing lows which we are seeing in the daily chart. So we believe that if these lows are broken, then we are rounded off to 17,750. If these levels are broken down, then there will be a further profit booking in the market. So we are a little bit on the cautious side. We will maintain aggressive buy only when 18,300 levels are broken on the higher side. So as long as 18,300 levels are not broken, we have a cautious view, and the further sell-off can be seen if 17,750 levels will be broken. So this clear picture, this will be very clear if you can, if you all can check our daily technical report. We have plotted the chart with this pattern, so it will be more clearer what levels we are talking.
So we have a cautious view on the Nifty. We will figure out if 17,750 is broken, a little bit more downside can be expected in the Nifty. Coming to Bank Nifty was also down by 1.33%. Almost close near to 42,000 level. So eventually, first the Bank Nifty started weakness when it broke 43,000. From 43,000, the next support level is 41,500. The same thing we have plotted in the chart. If you check our technical report, it will be very clear why we are saying 41,500 level. So in the near term, if 41,500 is levels are broken in the Bank Nifty, then there will be a little bit more weakness in the Bank Nifty also. So we are having a cautious view at the current level. So for both the indices, 17,750 and 41,500. These are the levels to watch. If these levels are broken, then let's have a bit cautious view on both the indices. Coming to derivatives report. So in Nifty futures, we saw a short build up to the tune of 3.32%, which was the addition of 4.26 million shares. If you look at the put call ratio, that is also has declined. Earlier, the PCR was 0.97. It has declined to 0.71 in yesterday's session. The major additions were seen in the 18,000 and 18,100 call option. So that is likely to act as a resistance. Lower side, in the major additions were seen in 17,700 put strike price. So that should act as support from the derivatives point of view. Coming to Bank Nifty also has seen the short built up in yesterday's session to the tune of 3.69%, which was addition of 25.3 lakh shares. PCR is also declined in Bank Nifty 0.75% to 0.75 to 0.57. So the PCR coming to 0.57 might act as a support in Bank Nifty. The major additions in Bank Nifty in the put options was 41,900 and 41,800. So this might act as a support. And on the call front, 42,300 and 42,500 call price has seen a significant interest built up in the opening. So this should act as a resistance. Coming to FI data, so FIs are again sold in yesterday's session close to 26,384 contracts, and the long short ratio from 49 days again come back to 41%. So the FI index and net short by 28,000 contracts. So we are having a little bit cautious view. So mainly this sector-wise, I think auto stocks will be in focus as the Auto Expo is going to start from today, from 11th to 18th June. So that may be in a radar. So that's all from my end. I'll go and hand over to Bhavesh for more research updates. Yeah, hi, good morning, team. So starting with update on Cyient. So Cyient subsidiary has filed an IPO for rupees 740 crores. So the back of the envelope calculation suggests that it gives a market cap of 3,000 crore and a PE of 75x. And Cyient is currently trading at a PE of 15x, and we have a positive view on Cyient as of now, buy rating. Second, about Indian hotels. So they have signed two resorts on the islands of Suheli and Kadmat, which are in Lakshadweep, and both these will be in Taj brands. And Suheli will have 110 rooms, whereas even Kadmat will have similar 110 rooms. As of now, we have a hold rating on Indian hotels. And lastly, on Axis Banks. So Axis Bank has entered into a revised agreement with Max Financial Services to acquire additional 7% stake. So if this goes through, it will have a total stake of 12.99% after this. And as of now, we have a positive view on Axis Bank with a target price of 1120. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, Bhavesh sir. Good morning, everyone. Further news updates are PC Jewelers, the company deposit sales in the quarter ended December rose 38% on year to rupees 829 crore. The jewelry maker opened a new franchisee showroom in Bihar during the quarter. Shigachi Industry, the company board on Tuesday approved an increase in authorized share capital from rupees 32 crore to 42 crore by way of issue of up to 1.10 crore convertible bond to the promoter at rupees 285.30 per share. Uttam Sugar Mills
has increased its distillery capacity for ethanol from 150 KLPD to 250 KLPD at Barkatpur plant, and cane crushing capacity from 23,750 TCD to 26,200 TCD. Bank of Baroda, the state-run bank, has hiked the marginal cost of funding-based lending rate by up to 35 BPS across tenure with effect from January 12. Lastly, Reliance Industry, the company's subsidiary Reliance Jio Infocom, will invest additional rupees 2,500 crore to deploy 5G network services in Assam. Currently, the company's investment in the state is rupees 9,500 crore.